हेलो एंड वेलकम once again to Bidyasagar classes जो माने एबे OTET रो पेपर 1 दे सारी छो एबे औ क्वेश्चन रो आंसर जानिबा को चाहो केतेटा भूल हला केतेटा ठीक हला तो आसो देखिबा फर्स्ट हमें ईबीएस रो स्टार्ट करिबा ईबीएस रो जो रहिला ज्योग्राफी एंड जो साइंस पोर्शन टा रहिला सेही पोर्शन भितरु कोटा ठीक आंसर गुडा रहइबो हम एबे देखिबा तो प्रथम आसी जाउ छ हमरो 129 नंबर क्वेश्चन जोटा रहिला व्हिच नेचुरल रिसोर्सेस इज रिन्यूएबल बट एग्जॉस्टेबल इफ मिसयूज्ड को रिसोर्स को जोटा रिन्यूएबल अछि बट जदी हमें मिसयूज करबा सेटा नष्ट होई जिवो तो एई भीतर कोटा हिजबो आंसर टा यार आंसर टा कोटा हिजबो कहलो कोटा हिजबो यार एटा होचे हमर हिजबो फॉरेस्ट टा कोटा हिजबो यार फॉरेस्ट हिजबो यार आंसर टा हला दुई नंबर क्वेश्चन हिजबा द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अछि हला अब दुईटा रहे हमर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गोटे होची ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अछि एई जगह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टा को थ्रू देखि पास करनी तो बहुत ही सहज क्वेश्चन रो आंसर टा सेटा हिजबो कोन हमर ओडिसा हिजबो हला राजस्थान एई जगह रे कोन हिजबो हमर ओडिसा हिजबो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टा ओके तापर देखो 131 नेक्स्ट जिबा जदि पोर्ट ब्लेयर को विजिट करियो चाहो समर रे वेकेशन रे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी इंडिया यू विल गो एई जगह रे को यूनियन टेरिटरी को जीवो को पोर्ट ब्लेयर को जगह रे अछि हमरो पोर्ट ब्लेयर टा अंडमान निकोबार आइलैंड टा होची पोर्ट ब्लेयर टा हला अंडमान निकोबार आइलैंड होची पोर्ट ब्लेयर जगह रे अछि आसुनी अंडमान निकोबार आइलैंड टा एटा टिक करिছে ठीक से देखा दो यस हला तापर रहिला आज केमती हला समस्त कमेंट सेक्शन टिके जणाई दियो एग्जाम टा पेपर 1 केमती हला समस्त टिके कमेंट सेक्शन जणाई देलो भलो होइछि ना केमती पड़िला कष्ट पड़िला तो भाई ना मीडियम लेवल लो थिला ना इजी लेवल लो थिला मते जणाई देलो कमेंट सेक्शन रे समस्त जो माने भी देखुछो तापर जीवा एटा रहिला गांधी कर रहिला एटा होछि हमरा हिस्ट्री पोर्शन टा गला एटा पाई करे बोले एटा हिस्ट्री पोर्शन टा सत्याग्रह ऊपर भी हिस्ट्री गला तापर रहिला हमर डिजीज टा कोन होछि जगह रे व्हिच डिजीज इज स्प्रेड मेनली थ्रू पॉल्यूटेड वाटर को डिजीज टा पॉल्यूटेड वाटर द्वारा को हबो स्प्रेड होय जगह रे मलेरिया त हबन ए जगह रे कोन आइजो हमर आंसर टा कोलेरा हबो कोलेरा होछि हमर पॉल्यूटेड वाटर द्वारा ए जिंसटा स्प्रेड होय हला आवा को जिबा 136 परे क्वासी ऑर्कर आसिला हमर गोटे डिजीज टे जोटा रहिला हमर प्रोटीन रो डेफिशिएंसी रे क्वासी ऑर्कर टा होय हला क्वासी ऑर्कर टा मन रखे जिंसटा होछि कोन क्वासी ऑर्कर 137 को प्रोटीन रो डेफिशिएंसी रे क्वासी ऑर्कर होय तापर रहिला ओके व्हिच फूड गिव्स एनर्जी एंड बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट रेस्पेक्टिवली कथा ए जगह रे कहिछि कि को फूड टा एनर्जी और बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स टा दे इजी थिला सर एग्जाम भलो हिची जा भी हो एग्जाम टा भलो हिची समस्त कर 100 ऊपर जदी आसी जाउ बहुत भलो हला हम एक्सपेक्ट करबे कि माने 100 ऊपर रखि दा बोली कि माने भलो आछ क्वेश्चन भी मु देखुतली क्वेश्चन टा बहुत ही बढ़िया थिला एई जगह रे कोन कहिछि एनर्जी माने एनर्जी फास्ट कहिछि एनर्जी माने कोटा जोटा कार्बोहाइड्रेट वाला थिबो सेटा होछि एनर्जी तो एई जगह रे फास्ट होछि राइस होछि हमर कोन रहइबो राइस होछि हमर कार्बोहाइड्रेट अछि माने एनर्जी देबो और सेकंड होछि बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट कहिछि बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट माने प्रोटीन थिबो ऑयल तो प्रोटीन नुहे तो एटा हेबोनी कोटा हेबो फ्रूट सेल भी तो हेबोनी वेजिटेबल हेबोनी तो पल्सेस हे जिवो तो राइस एंड पल्सेस मिसी की दीटा जाक कोन हे जिवो गोटे एनर्जी एंड बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स रो कॉम्बिनेशन टा रहिबो हला तो कोन हे जिवो 38 टा ए हे जिवो हमरो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा कोन अछि 39 नंबर क्वेश्चन अछि को ऑर्गन टा रिमूव करे यूरिया फ्रॉम ब्लड रू को ऑर्गन टा रिमूव करे यूरिया को सेटा देखिबा कोन हे जिवो हमरो एटा होछि हमरो किडनी टा कोन करे रिमूव करिवो ब्लड रू यूरिया को छाणी देबो हला किडनी रो होछि फंक्शन तापर देखिबा व्हिच सिस्टम वर्क्स टुगेदर विथ द सर्कुलेटरी सिस्टम टू सप्लाई ऑक्सीजन सहित जो सप्लाई करिवार काम जो रहिला सर्कुलेटरी सिस्टम सहित आ को सिस्टम टा काम रे आसे तो देखिबा एटा कोन हे जिवो एटा हे जिवो कोन हमरो रेस्पिरेटरी सिस्टम टा श्वसन जोटा हम कहू से जिनसटा सर्कुलेटरी सिस्टम सहित हमर मिसिकी ऑक्सीजन सप्लाई टा दी जण मिसिकी ऑक्सीजन सप्लाई करंती हला नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमर व्हिच प्लांट
part mainly helps in the water absorption को प्लांट रो पार्ट ता वाटर एब्जॉर्प्शन रे हेल्प करे मेनली को पार्ट ता एटा सबठो सहज क्वेश्चन ता जदी बायोलॉजी रो देखिबा तो कोटा हे जे हमरो रूट पार्ट ता होची वाटर एब्जॉर्प्शन रे काम करे सबठो हला वाटर हला मिनरल हला रूट रो हमरो सब जिंस गुडा को कोन हुए ऊपर को जाए नेक्स्ट देखिबा व्हिच प्रॉपर्टी हेल्प इन डिस्टिंग्विश आयरन फ्रॉम एल्युमिनियम को प्रॉपर्टी टा 141 सीसी ओके 141 कथा मु जानि नी यस सी हबो ठीक कथा श्रीराम तापर देखो व्हिच प्रॉपर्टी हेल्प इन टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम आयरन टू एल्युमिनियम ए जगह आयरन और एल्युमिनियम भितरे को प्रॉपर्टी टा डिस्टिंग्विश करा जाय परिबो कोडा कहला देखो आयरन और जो एल्युमिनियम रहिला सेव तरे एमते किछि नाही सेव रे एसडा उडा जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी टा डक्टिलिटी दुई जनकर समान वॉल्यूम से हिसाब रे डिपेंड करे बट तांको भितरे को जिंसटा अलगा अछि ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टा अलगा अछि तो कोन है जो हमरो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टा यार अलगा अछि हला 143 नंबर को आसीबा व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट को प्रॉपर्टी मैटर रो सबले कांस्टेंट रो देखो से वॉल्यूम ए सब जिंस गुडा को तमरा डिफरेंट डिफरेंट रहिबो साइज टा अलग अलग रही परिबो बट मास होची जोटा सबले कोन रहे रिमेन कांस्टेंट रहे हला तो 143 कोन होई जिवो सी होई जिवो तमरा करेक्ट आंसर टा नेक्स्ट जिबा व्हाई डू वी सी सीजन्स ऑन अर्थ अर्थ रे कोथि पय सीजन टा आसे कोथि पय आसे सबठु सहज आंसर होची कोन रिवोल्यूशन पय आसे कोथि पय आसे रिवोल्यूशन और जो टिल्ट एक्सिस अछि एक्सिस रो एक्सियल टिल्ट पय ही से जिंसटा हुए हला तो एटा कोन हमर रिवोल्यूशन हे जिवो 144 रो बी रिवोल्यूशन टा तापर रहिला देखिबा सॉरी गला बस साइंस सेक्शन रो सॉरी गला एबे सर आसीबे सर आसंतु हेलो पिला माने नमस्कार जय जगन्नाथ आई होप तुम मानकर एग्जाम भलो होईची क्वेश्चन देखुतली क्वेश्चन किछि डिफिकल्ट नाही बहुत इजी क्वेश्चन आसी ईवीएस त माने माने बाएं हाथ का खेल जो कोंदनी बाया जो ये फिंगर पिंकी फिंगर गेम एटा बहुत सहज क्वेश्चन पड़छि माने हिस्ट्री पॉलिटी जदि जण न पढिबो भी कॉमन सेंस यूज करके क्वेश्चंस करि परिबो सेही वाला क्वेश्चंस पढिछ हला देखिए दोस्तों मो क्वेश्चंस इवन ज्योग्राफी भी किछि डिफिकल्ट नतला अनि सर ज्योग्राफी कहि दिछन ओके सो हमें 126 आरंभ करिबा 126 पॉलिटी स्टार्ट होउछ हला सो प्रथम क्वेश्चन देछि व्हाई डू वी नीड लोकल सेल गवर्नमेंट हम जानछन कोन लोकल सेल गवर्नमेंट गोटेला हमर पंचायत गोटेला म्युनिसिपैलिटी सिंपल कथा लोकल एरिया डेवलपमेंट लोकल लीड्स को मैनेज करिया पई 126 रो बी हबो करेक्ट आंसर टू मैनेज लोकल नीड्स देखो क्वेश्चन में किछि नाही कॉमन सेंस रूल द कंट्री पूरा फालतू कथा लोकल गवर्नमेंट केबे रूल कलानी कोर्ट्स को कंट्रोल केमिति बा करिवो जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव विथ रिलेशन कोन सॉरी जुडिशियल लेजिस्लेटिव विथ रिलेशन कोन टू मेक नेशनल लॉज एटा पूरा फालतू कथा नेशनल लॉज तो पार्लियामेंट बने सो मैनेज लोकल नीड्स एटा पूरा ठीक अछि a child labor case is reported which institution ensures justice गोटे चाइल्ड लेबर केस को रिपोर्ट करा हैछि को इंस्टीट्यूशन टा जस्टिस दबो सिंपल जिंस हम जानि चंती हम फंडामेंटल राइट्स रे आर्टिकल 24 दिया जायछि कोन प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर ता माने जदी चाइल्ड लेबर कोठी होउछि कोर्ट रे केस करा जिवो सो जस्टिस के दबो कोर्ट दबो 127 में सी 128 why should courts remain free from political pressure कोर्ट्स को पॉलिटिकल प्रेशर काहे के अलग रखिबा तमन जानिथिबा हमर आर्टिकल अछि आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कि जुडिशियरी काम रे एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर करिबा नाही पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव करिबा नाही काहे की टू प्रोटेक्ट जस्टिस जस्टिस जेमिति प्रोटेक्ट करा जाई परिबा हला व्हिच नेचुरल रिसोर्स रे कोआ जाईछि ओके ठीक अछि टॉपिक ऑफ कैंसर जाईछि सो ज्योग्राफी क्वेश्चन हां एबे देखो हिस्ट्री क्वेश्चन व्हिच स्लोगन बाय गांधी inspired people during quit india movement माने जे क्विट इंडिया पढ़े एटा तो गोटे बेसिक जिंस प्रथम जिंसटा पढ़े कि क्विट इंडिया मूवमेंट को टाइम रे कोआ जाइतला सर जो स्लोगन कोन क्विट इंडिया मूवमेंट रे दिया जाइतला डू और डाई रे स्लोगन दिया जाइतला 132 बी 133 व्हाई इज द पाइकर रिबेलियन कंसीडर्ड एन अर्ली फ्रीडम स्ट्रगल जो हमें फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ ओडिशा भी कहि परिबा काहे की कोआ जाय काना से कोन करतला अपोज करतला काहा को ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज को जो इकोनॉमिक टैक्सेस इंपोज करा जाइतला से टैक्सेस को अपोज करथिला से इकोनॉमिक पॉलिसीज को अपोज करथिला हम पाइको माने पाइको विद्रोह सो एटा हला करेक्ट आंसर 133 बी
सेम हम देखिबा 134 सॉल्ट सत्याग्रह वाज स्ट्रेटेजिकली पावरफुल सॉल्ट सत्याग्रह टा काहे की पावरफुल इट यूनाइटेड ऑल क्लासेस थ्रू एन एवरीडे इश्यू देखो एटा ही करेक्ट आंसर अब आउ बाकी जो स्टेटमेंट दर किछि माने ही नहीं फोकस्ड ऑन अर्बन इलाइट्स पूरा फालतू कथा अर्बन इलाइट्स ऊपर केतरा फोकस कला सॉल्ट सत्याग्रह एंडेड सॉल्ट इंपोर्ट्स पूरा मिछ कथा टारगेटेड ब्रिटिश मिलिटरी पावर पूरा भूल करेक्ट आंसर बा यूनाइटेड ऑल क्लासेस काहे की कारण सॉल्ट गोटे एमिति जिंस जोटा सब सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बांधी के रखुतला सो सेट पई 134 रो करेक्ट आंसर हिजबा ए हाउ डिड गांधीयन मूवमेंट्स इन्फ्लुएंस फ्रीडम स्ट्रगल इन ओडिशा देखो गांधी जी जो भी सब मूवमेंट थिला जहां भी मूवमेंट से आनुतले से सत्याग्रह मूवमेंट हो नॉन वायलेंट मूवमेंट हो ओडिशा रो फ्रीडम स्ट्रगल को केमती इंस्पायर कला तमे ओडिशा कथा भी माइंड रो बाहर कर दबो केवल गोटे स्टेट कथा भाबिबो महात्मा गांधी का फिलोसफी लोकल लेवल रो समस्त को जोड़ी के रखुतला सेत में स्टेट मानको बहुत हेल्प करतला सो करेक्ट आंसर कोन हबो बाय एनकरेजिंग बाय लिंकिंग रीजनल प्रोटेस्ट टू नेशनल गोल्स प्रति रीजन जो सब प्रोटेस्ट चलीथिला ताको नेशनल गोल सहित लिंक करूथले फ्रीडम स्ट्रगल सहित लिंक करूथले से हिसाब रे हमको हेल्प करथिला जेंति भाबे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एटा गोटे नेशनल गोल थिला असहयोग आंदोलन ताकू भी लिंक करा गला स्टेट सहित बुझि पारला नै सॉल्ट सत्याग्रह गोटे नेशनल स्ट्रगल थिला ताकू भी लिंक करा गला सॉल्ट सत्याग्रह इन ओडिशा इंचुडी रे जोडा हितला बुझि पारला सो लिंक करा जाउथला तापरे 136 गला 137 138 खोआ जाईची सब खोआ जाईची नेक्स्ट चला इडी गोटे वन महोत्सव रो गोटे थिला 145 हला कोन इडी देखि दिए प्ले इन द फर्स्ट वीक ऑफ व्हिच मंथ वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया जुलाई 1st टू जुलाई 7th जुलाई 1st टू नहीं की जुलाई 7th भितरे वन महोत्सव ऑर्गेनाइज करा जाय जोतरा में ट्रीज को प्लांट करू बहुत सहज क्वेश्चन आराम से करि परिबो अच्छा पहले मैं ओडिया क्वेश्चन टा टिके करे दोउची हला कना मैडम एबे आसी परिबेनी सो से क्वेश्चन रो आंसर पठे दैछंती आई विल जस्ट टेल यू द ओडिया क्वेश्चंस कोन कोन थिला गोटे सेकंड हां टिके पहले 2 सेकंड रो कहू ओके ओडिया क्वेश्चन स्टार्ट हो 51 ना सर 31 में तमरो ओडिया क्वेश्चन आरंभ होउची 25 26 27 29 31 ओके ओके प्रथम क्वेश्चन केउटी अनुग्रहर विपरीत अर्थबोधक शब्द करेक्ट आंसर हो विग्रह विग्रह होउची अनुग्रहर विपरीत अर्थ सेकंड अति दुष्ट अर्थ बुझाउथिबा रूढिटी को बाछ 32 रो करेक्ट आंसर होची बी बण बिछुआती माने हला अति दुष्ट एथि मध्यरु केउटी संयोजक अवय निर्णय कर 33 करेक्ट आंसर हो ए एवं गोटे संयोजक अवय हला नेक्स्ट प्रतिमूर्ति एथिरे थिबा प्रति उपसर्गटी केउ अर्थ रे व्यवहृत होईछि 34 करेक्ट आंसर होछि ए सादृश्य अर्थ रे हला 35 पोर्टफोलियो मूल्यांकन पई मूल्यांकन केउ प्रकार मूल्यांकन रे व्यवहार करा जाय 35 रो करेक्ट आंसर होछि बी गठनमूलक तापर देछि कोन सर्वे होइण एकमुख डाकिले नारायण रख हला सर्वे को अंडरलाइन करा जायछि रेखांकित अंशटी केउ पद बोली पचाछि हला ओके जूम कर रेखांकित अर्थटी केउ पद बोली पचाछि अंशटी सर्वे करेक्ट आंसर होछि कोन 36 रो डी सर्वनाम सर्वेटा हला कोन सर्वनाम ओके तापर नेक्स्ट हला 37 छाती की पत्थर करिबा ए रूढ़ीर अर्थ कोन 37 रो करेक्ट आंसर होछि सी धैर्य धरिबा छाती को पत्थर करिया माने हला धैर्य धरिबा 38 साधारणतः मातृभाषा काहा को कहा जाय मातृभाषा में काहा को कहू मां कोलरु सिखितिबा भाषा 38 रो सी हला नेक्स्ट बा 39 देछि बोध शक्तिर विकास पाई जो पठन करा जाय ताहाको कोन कहा जाय करेक्ट आंसर बा तात्विक पठन हला बोध शक्तिर विकास पाई जो पठन करा जाय ताको कहा जाय कोन तात्विक पठन हला तार जिबा 40 नंबर प्रश्न आडकू 40 नंबर प्रश्न कोन पछाछि परम दयालु ईश्वर तुमरो मंगल करंतु परम दयालु ईश्वर तुमरो मंगल करंतु परम को रेखांकित करा जायछि रेखांकित पदटी केउ प्रकार रो विशेषण बोली पछाछि करेक्ट आंसर हो विशेषण रो विशेषण
विशेषण विशेषण दयालु गोटे विशेषण परम जेहेतु लगी विशेषण विशेषण है। नेक्स्ट 41 41 पे तुम आरंभ हो जाए पैराग्राफ है गोटे देइछि पैराग्राफ टाइप रो 41 खाली मैं ऑप्शंस कहि दोछि ओके एटा को सेट खोला हिची सेट ए रो 41 जो माने जानि परिबनी कहि दोछि सेट ए ता ठीक अछि 41 कोन देइछि विधाता केउ विधान करिसंती बोली कवि कहिसंती 41 करेक्ट आंसर सी झियर सासु घर जिबा झियर सासु घर जिबा नेक्स्ट होछि 42 कोन देइछि घास पड़िया रे गां बाट किपरि शोभा पाउछि 42 रो करेक्ट आंसर बी नील आकाशर छाया पथ परि कोपरि नील आकाशर छाया पथ परि कवि काहाकू उलग्न शिशु परि विचार करिसंती करेक्ट आंसर ब सी ग्राम पथ को उलग्न शिशु परि विचार करिसंती नेक्स्ट 44 बेणु बन बोली सॉरी बेणु बन कहिले कोन बुझ बेणु बन कहिले बाउंस बन हला बयसर अपराह्न रे कविंक जीवन यात्रा किपरि मने होइछि 45 रे करेक्ट आंसर ए कष्टकर मने होइछि नेक्स्ट जीवा 46 आ गोटे प्ले सेंदी पैराग्राफ देइछि ओके क्रीडा कोन करी न थाए जड़ करी न था केउ खेल को भारत रे पारंपरिक सामंतवादी खेल रूपे विचार करा जाए 47 रो करेक्ट आंसर होचे डी पाली खेल नेक्स्ट 48 केउटी विशेष भाव रे उल्लेखयोग्य बोली कुआ जाइछि 48 रो करेक्ट आंसर होचे डी सॉरी कोटे सी ठीक है हमरा बार लाइट तो दुकु 48 रे डी शरीर ऊपर क्रीडार प्रभाव हला 48 रे डी शरीर ऊपर क्रीडार प्रभाव आजि पाश्चात्य सभ्यता मनोभम भस्मपन व्यक्ति माने काहे कि निजको कृतकृत्य मने करूछंती 49 रे करेक्ट आंसर सी विदेशी खेल को आदरी थिबारु हला विदेशी खेल को आदरी थिबारु कबड्डी की प्रकार रो खेल करेक्ट आंसर होची शारीरिक तापरे 51 ने पिले तमरो गोटे संधि टाइप रे देइछि हला श्रु प्लस अन केउ कृदंत पदटी निष्पन्न हेबो श्रु प्लस अन केउ कृदंत पद 51 करेक्ट आंसर हबो सी श्रवण कोन हबो श्रवण केउटी हाथी रो प्रतिशब्द नुहे बी मातंग हाथी रो प्रति सॉरी तुरंग सॉरी तुरंग 52 रो ए 52 रो ए होची प्रतिशब्द नुह ओके नेक्स्ट 53 देइछि कोन मातृभाषा रे अतिरिक्त साहित्य शिक्षादान काहे की आवश्यक 53 करेक्ट आंसर होची ए विषय वस्तुर सार कथा और मूल्य बोध जानिबा देखिबा 54 केउटी पद्य शिक्षादान रो उद्देश्य संपर्कित नुहे 54 करेक्ट आंसर बपिले बी लेखक प्राबंधिकंक संपर्क रे अधिक जानिबा पई उत्साहित करिबा हला नेक्स्ट 58 कोन देछि पिले निम्नोक्त मध्यरु केउटी विशेष्य पद नुहे करेक्ट आंसर डी साहसी गोटे विशेष्य पद नुह 56 केउ पद्धति अनुसार अक्षर गुडी को क्रमानुसार पढ़िबा पई शिक्षा दिया जाए 56 करेक्ट आंसर बी वर्णानुक्रमिक पद्धति हला 57 पिलार स्वाधीन चिंता शक्ति प्रकाश करिवार सर्वाधिक सुजोग केउ प्रकार लिखन रे थाए करेक्ट आंसर 57 रो एटा आ गोटे ये खोलिथिले इथाना से काई इतरे खोलछन 57 ना एटा होला तारा 57 आंसर हो सी पिले हैला मुक्त
57 करेक्ट आंसर होची सी मुक्त 58 भाषा शिक्षार चारि स्तंभ मध्यरु केउ शिक्षा को प्रथम स्तंभ बोली कहा जाए 58 रो करेक्ट आंसर होची बी श्रवण 59 कोनोसी प्रसंगर आलोचना शेष रे जे मूल्यांकन हुए ताको कोन कहा जाए 59 रो करेक्ट आंसर होची बी सामग्रिक मूल्यांकन 60 नंबर प्रश्न केउटी निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्नर अंतर्गत नुहे 60 करेक्ट आंसर डी दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न 60 करेक्ट आंसर होची डी आणि एतिके एंड हला हमर ओडिया क्वेश्चन सो ईवीएस क्वेश्चंस को आगला ओडिया क्वेश्चंस को आगला वे मैथमेटिक्स क्वेश्चन बाय देवासी सर आस गुड आफ्टरनून एवरीवन आई होप तुम्हारा एग्जाम भले जाइथिबो हम देखिया मैथ क्वेश्चन खाली एबीसीडी कर देल दबनी मु खाली कोन करे पड़ियो टिके हल्का कैलकुलेशन भी कर देबी आजा आजा हाँ एटा छला हाउ शुड द मैथड एटा टीचिंग एप्टीट्यूड सर कहबे फर्स्ट सेकंड वाला तापर असला व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू नेचर ऑफ मैथमेटिक्स हाँ हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री आर देयर इन ए ट्रायंगल लाइन ऑफ सिमेट्री माने कोन जोटा को कट कले गारा पकेले तीन इक्वल साइड रे कन्वर्ट होबो तो एटा गोटे आंसर हो कोन 3 लाइन ऑफ सिमेट्री तापरे which number will lie in place of star एटी केता अछि देखा कोन एटी गोटे नंबर सीरीज रो क्वेश्चन अछि जे 8 रे 2 गुणले 16 - 2 तमने 8 * 2 - 2 एटी जे जे कोन ना 14 * 2 - 2 एटी सेमते 26 * 2 - 2 एठी भी हवा 50 * 2 - 2 केता बसे ना 98 ओके तापर देखो अगुगु सत्यम स्टडी 2/3 आवर इन द मॉर्निंग एंड 3/4 आवर इन द इवनिंग 2/3 सकाळ पडची 3/4 रात्री पडची तो टोटल केते पडची ना 2/3 प्लस 3/4 मिसले केते होची एलची में गला 12 ये गला 3 * 4 12 2 * 4 8 4 * 3 12 3 * 3 9 माने 17/12 मो आकु जदी ए कोन हैला ये आवर रे भाला बट मु देखले आंसर रे तो नाही से मते एला कन्वर्ट करिया पड़िया कोथरे आवर आ मिनिट को एटा हे गेले कोन हिजबो ना वन होल माने कोन ना 1 आवर हे गेला एबे अछि कोन ना साइड रे आ बोली छि केते ना 5/12 मिनिट आवर एबे टोटल टा को जदी मु आवर रे कन्वर्ट करिया चाहिबी से कोन हिजबो 1 होल 5/12 तो ये तो 1 आवर हे गेला एबे 5/12 आवर ता केते मिनिट हबो ना 5/12 * 60 केते 25 तो घंटे 25 मिनिट कोन हो ऑप्शन डी a number becomes 135 after 150% increase देखो नंबर टा 50% बढ़ी छि माने 2 जगह रे 3 हिच 3 जगह से कहूची 135 तो 2 जगह रे केता हो 90 लगी से कहूची 90 व्हाट इज द 20% ऑफ द नंबर 90 रा 20% केता हो ना 18 केन बारियो 20/100 सुन सुन कटी गला लगी 50% माने हला 1/2 तो 2 रु 1 बढ़ी What is the smallest number, natural number, which divides 7, 9, 11? देखो यही बोलिया नंबर प्रोसेस बहुत थिले भी तो हम हिट एंड ट्रायल करियो जे 9 रे डिवाइड करले 3 बोलु त माने 3 माइनस कला परे जो नंबर टा 9 रे डिविजिबल हबो सेटा मु चेक करबी के ना इठी देखली जदी 3 माइनस करची 636 कोन ये 9 रे डिविजिबल की मिसेले 9 रे डिविजिबल हवा दरकार होची ना एठी 3 रे माइनस कले केते होची 690 कौन मिसेले ये 9 रे डिविजिबल हो चुकी ना 80 माइनस कले 3 ना 689 मिसेले केते हो चुकी रे 8 6 14 9 23 ये भी होनी एको 3 माइनस कले केते ना 684 ये होची 9 रे डिविजिबल तो गोटिए रही मु जानि गली ऑप्शन नंबर डी हला पूरा करिया दरकार नहीं प्रणाम सूर्य रिटर्न ट्रायल एटा गली द टू डायगोनल्स ऑफ व्हिच क्वाड्रिलेटरल पाई देखो मु बहुत थर कछि रम्बस रो गोटी जानिबा जिंस कोन ना तार जो डायगोनल अछंती से माने बाइसेक्ट करिवे पुनी केमती ना 8 राइट एंगल त माने ए दीटा समान आ ये 90 डिग्री लगी एटा कोन हबो रम्बस हबो आंसर तापर असला कोन
देखो एटा टिके ट्रिकी अछि ए क्वेश्चन दा कोन ट्रिकी अछि ना जेहेतु 0.005 0.005 0 माने 5 अछि बस डेसिमल ले फरक अछि मते एटा भी ध्यान से करिया पड़ियो नले कोन हो ना प्रॉब्लम हे जीवो कोन अछि 0.8 ऑफ व्हिच नंबर जगह मु x नली इज इक्वल टू केता बसे कुची 0.0004 हला तो डेसिमल कर दियो आगे फ्रैक्शन कर दियो 8/10 इनटू x इक्वल टू 4/1 केतेटा जीरो हबो ना 5टा जीरो हला 5टा जीरो एपटे गोटे जीरो कटि गला 4 कटि गला एपटे 2 तबे कोन हबो देखो केमती सॉल्व करबी ना जदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करबी ये कोन हो जो ना 2000x is equal to 1 x वैल्यू केते हबो 1/2000 जोटा कि डेसिमल कले केते हबो 5 बाय केन डेसिमल करी 5 टे ऊपर 5 टे तळे गुणी तो ये केते गला 5/10000 10,000 माने डेसिमल पर 5टा नंबर थिबो ओहो 5टा शून्य थिला 4टा शून्य हां हां एटी गोटे शून्य ता माने डेसिमल पर केतेटा नंबर रहिबो ताटिके देखो ना 1 2 3 4 5 कोउडी अछि 1 2 3 4 5 इसका आंसर हबो सी हैला कि देखो एटा जेतु 0.8 सिटी माइनस मार्किंग होएगी नहीं सिटी नो एटा सिटी रे होए एटी ओटीटी रे होए देखो पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन केते बढ़ुची 8% लेखा बढ़ुची केते थिला 40000 थिला 40000 जदी थिला 8% लेखा बढ़ुची मु कोन करबी ना 40000 इनटू 8% बढ़िला 8% जदी बढ़ला केते गेला 108 कोन करे 8% बढ़ला तो से केते गेला 108 जेति की वर्ष सेते 8% बढ़ीची एबे शून्य काटी चलो शून्य शून्य कटि गला शून्य शून्य कटि गला कोन रहला 4 इनटू 108 इनटू 108 बट देखो मल्टीप्लाई करिया बदल रे मु कोन कली 8 64 लास्ट को 4 आसीबो 4 4 16 लास्ट को 6 आसीबो 6 कोठी अछि ना एठी नहीं कैंसिल और वाला कोन ए दीटा मते गुनिया पड़ियो धाले हां 108 स्क्वायर केते हबो देखो 108 इनटू 108 अछि तो 108 स्क्वायर केते हबो 64 8 रु 8 अधिका 116 हला कि एबे मते गुनिया र अछि केते ता देरे ना 4 तो स्टेप बाय स्टेप देखिबी जोठी मैच करिया बंद हला सेठी कैंसिल कर देबी 4 4 16 6 एठी भी अछि एक नहीं छी 6 4 24 के 25 एठी अछि एठी नहीं सरला पूरा गुनिया दरकार नहीं दीटा स्टेप रे ही जो काम एटा केते ऑप्शन डी तापर आगु चलो मल्टीप्लिकेशन विथ इनवर्स ऑफ 1/2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माने कोन जा छी ताको उल्टे के लिख दियो 1/2 इज how much more or less than multiplicative inverse of 1/3 केते अधिका ना कम फर्स्ट ऑफ ऑल ना 1/2 टा अधिका केमती जानिबी डेसिमल कले ये होची 0.5 ये होची 0.6 0.3 हां तो ये तो ऑब्वियसली अधिका तो मोर हबो लेस तो हबनी एबे माइनस कल केते हबो ना 1/6 तो ऑप्शन बी हला तापर असला कोन 50 सेकंड जाउची 500 मीटर तो स्पीड केता हबो ना 500/50 के काटले केते 10 मीटर पर सेकंड ना ऑप्शन है 10 अछि ना मीटर पर सेकंड अछि तो हम जानची 5 मीटर पर सेकंड का संग समान 18 किलोमीटर पर आवर तो 10 मीटर पर सेकंड का कोन हबो 36 किलोमीटर पर आवर हला लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ a rectangle is 5 meter 1 meter respectively गोटे कोन अछि रेक्टेंगल अछि जार लेंथ ब्रेड्थ केते ना ये 5 है ये 1 है तापर से कोन को देची एंड लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर कोन अछि ना डायगोनल देची केते एटो जाय 2√2 तते डायगोनल 2√2 साइड केते 2 कहा भीतर रिलेशन देची के देखो एरिया भीतर देची मु फर्स्ट आर एरिया बार कली 5 मीटर स्क्वायर जदी आर एरिया बार करबी 4 मीटर स्क्वायर ता माने कोन हबो रेक्टेंगल लो एरिया ता 1 स्क्वायर मीटर अधिका अछि काटू स्क्वायर रेक्टेंगल लो अधिका अछि 1 मीटर स्क्वायर काटू स्क्वायर तापर जिबा नेक्स्ट if the length and breadth of a rectangle are both double ता माने l ता कोन हे जायछि 2l b ता कोन हे जायछि 2b ता माने फर्स्ट रो एरिया थिला l * b
एबे कौन है जाइए 4 इंटू एल इंटू बी तो केते गुण है ना 4 टाइम्स a solid sphere is melted and recasted into its equal small अच्छा देखो बॉर्डर टा मेल्ट है कि छोट छोट होई ता माने बॉर्डर जो वॉल्यूम अछि से समान हबो का संगे रे छोटर वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ बॉल अग्नि तो जहाँ कांस्टेंट अच्छी काटी चलो तो हम कौन पाइली आर क्यू इज इक्वल टू आर टू रो स्क्वायर इनटू आर टू रो क्यू इनटू नंबर ऑफ बॉल एबे कौन देछि व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ ईच स्मॉल अच्छा नंबर दे देछि 8टा बोली त माने एन जगह रे हम कौन लिख परबी r1 क्यू इज इक्वल टू r2 क्यू इनटू 8 है कि तापर से कौन देछि देखो ठीक है व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ ईच स्मॉल है जदि मुझे बाहर करी रेडियस दी पटे क्यू हटेले से कौन हम 2r स्क्वायर r2 है तामाने कौन हम एठी हाफ द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर है कौन ओरिजिनल एठी जहा अछि एठी जदि दुईटा पट को आनी से भी से आइजवन कि हाफ r1 इज इक्वल टू r2 तो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ ओरिजिनल तापर नेक्स्ट 3 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब कौन है जी 1 बाय ऊपर गोटे थुआ है से सॉलिड क्यूब रो साइड केते अछि 2 सेंटीमीटर तो वॉल्यूम केते हबो 2 क्यूब हला से कौन होची 2 क्यूब माने केते की ना 8 एमतिया तीनटा जदी थुआ है ता माने तीनटा 8 अछि 8 8 8 24 सेंटीमीटर क्यूब देखो एटा टिके मु एपट कर दोची काहे ना सेपटे ऑलरेडी से कर देची से कार वैल्यू बचची x रो वैल्यू PNB एटा अछि 3x एटा अछि 3x से पिल्ला भी करछि सेया ओके एटा जदी 48 एटा भी 48 होला ये 100 हो जाय लानी हिजो एटा 48 लाल को एटा 48 एटा भी केता 48 जदि 48 48 96 पळेला एठी केते रहिबा आ 96 रे केते मिसेला हो कि ना 84 तो एटा जदि 84 ता माने एटा भी केते 84 तो 84 प्लस 3x इज इक्वल टू केते ना 180 काहे कि समान लीनियर हे गले एबे 3x रो वैल्यू केते हबो ना ये पटु गले 96 और x रो वैल्यू केते हबो 96/3 इज इक्वल टू 32 तो माने एटा कोन आंसर ऑप्शन सी 32 एटा देखो गोटे स्टैंडर्ड क्वेश्चन रे पड़ जी हाँ जदि से कौन कहूँ एबीसी यही चापटा ता माने से कहूँ कौन ना यही तो से कौन कहूँ चापटा जदि 130 डिग्री बनेब आसीबो आसीबो हे लो हे ई लो हे एगा टिके हाँ 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 आपको लिखा अच्छे ना देखो जदि एटा सेंटर रे बनेबो से कहूँ केते 130 ताले ता अधा बनेबो ऑन द कोन सर्कमफरेंस त माने ये 30 वाला को ये केते हिजबो 65 जेतु ये गोटे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हे गला त माने 65 प्लस एबीसी केते हबो ना 180 और एबीसी केते हबो 180 माइनस 65 केते हबो से ना 115 ऑप्शन बी एटी कोन अछि फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी एबीसी काई एबीसी एबीसी एटा केते पचाछ हैला कोन दे छी बीसीएफ एपटे कर देबी काहे ना से पटे गारे दे से पिला अरे इन्फ्लुएंस कर दो एबीसी रो माप पचाछि बीए बी बी गई बीए एटा केते अछि ना 2x तापरे एमबीपी
एमबीपी एटा अछि केते ना x एटा जदी x भीतरटा भी x हला एबे बीसीएफ 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 एटा केते अछि ना 110 ठीक है ध्यान से देखो जदी एटा x भीतरटा x आ एटा 110 ताले मु कहि परिबी कि एटा 70 काहे कि मिसले 180 हबो ए दुटा मिसले 180 बारटा 110 भीतरटा हला 70 एबे 70 प्लस x मिसी की एक्सटेरियर संगे समान हेबे तो x वैल्यू केते बारी होला ना 70 हला देखिए पिला कोन करची ठीक करची के जानी कोन लिखिची एबीसी रे ए केते अछि ना 54 बी केते अछि ना 62 सी केते अछि ना 64 ए बी सी तो तुम जानछो कोन हबो आगे ऑर्डर लेखो कार एंगल सबटु बड़ हला सी तापर हला बी तापर हला ए तमाने सी आगे रे जे अछि सी हबो सबटु बड़ की अछि ए बी की अछि सी ए की अछि बी सी हां ए बी सी कोड अछि ए बी सी सी ठीक कर दो बी हला केते 62 ए हला 54 हां सी आगे जे अछि ए बी बड़ तापरे हां आगे चलो टोटल थिले केते 1080 1080 थिले माने 360 डिग्री जगह रे केते अछि रे ना 1080 से पचाची कोन से पचाची क्लास आईएक्स आउ एक्स टोटल स्टूडेंट आईएक्स आउ एक्स रे मिसी केते अछंदी ना 135 रे केते होबे 135 ना 1 डिग्री केते की ना 1080 डिवाइडेड बाय 360 0 कटी होला एबे 108 डिवाइडेड बाय 36 36 3 जा 108 तो ये केते हबो 3 गुणा हेले ना 300 5 3 15 5 रखिना लायक तो 0 रखिना लायक तो 400 5 5 हला ऑप्शन बी सोला तो एतिक दिलाते कमेंट रे जणाओ जे कहार केते अछि कहार केते मार रखिजो किए कहार केते अछि मार्क मैथ रे केते रहला केतेटा ठीक कलो केतेटा ठीक कलो केतेटा ठीक कलो केजण कोन ठीक कलो केते ओके गुड आफ्टरनून पिला माने एग्जाम केमिति गला मु तो देखली क्वेश्चन रो लेवल बहुत इजी टू मॉडरेट अछि आशा करछि तमार जो कॉन्फिडेंस लागि 30 आउट ऑफ 30 आशा करछि आसीथिबो तो 30 आउट ऑफ 30 स्वप्न पूर्ण होई छि कारण क्वेश्चन रो बैलेंस एते हाई जाई नै मीडियम लेवल रो अछि इजी क्वेश्चन अछि ओके आंसर गुडा को कहूची मैच कराओ आ मते टेलीग्राम चैनल जणैबो कि को मानको 30 आउट ऑफ 30 रहइला ओके स्टार्ट करिवा 1 सेकंड
ओके पेडागोजी रो आंसर की डिस्कशन करबा 1 to 30 एटा होची कोन ना आंसर को दोची एटा होची सेट ए जहार सेट ए अछि से माने मैच करि परबो डायरेक्ट आंसर माने सेट ए नाही खोजिबो आंसर कोठी अछि ओके पिला माने the first question देछि in what type of question the possibility of guessing is the least सब least कोठी अछि possibility ना मैचिंग टाइप रे possibility अछि 25% yes and no रे अछि 50% मल्टीपल चॉइस रे कोन ना एटा मैचिंग टाइप रे 50% ए मल्टीपल चॉइस रे 25% किंतु आंसरिंग सिंगल सेंटेंस क्वेश्चन में कोनोसी गेसिंग नहीं आंसर जानि छ कहि नेक्स्ट आंसर टी आंसर टी फर्स्ट नंबर आंसर टी नेक्स्ट which is not related to the learner center education पर ओटे learner center education related नुह ओटा नुह पिला माने ना टीचर एटा जे फैसिलिटेटर पिला माने learner center रो टीचर टीचर्स थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन मेथड पिला माने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड टा ओटे टीचर सेंटर से आंसर बी दुई नंबर रो आंसर बी जो माने बी मारिचो समस्त तर आंसर करेक्ट जो माने दुई मारिचो से मानकर आंसर करेक्ट जो माने टू मारिचो से मानकर आंसर करेक्ट What a second खाली मार्कर टा रेडी कर दी ओके दुई नंबर आंसर बी जो माने बी मारছে आंसर ठीक अछि नेक्स्ट कोन देछि What a second ओके दुई नंबर आंसर बी जो माने बी मारছে आंसर ठीक अछि नेक्स्ट सिबा तीन नंबर आंसर पिला माने मार्कर रे प्रॉब्लम होछि तमे आंसर कहि लिखो इन व्हिच एजुकेशन सिस्टम बोथ रेगुलर एंड रिसोर्स टीचर इम्पैक्ट टीचर्स इम्पैक्ट टीचर पिला माने जो इम्पैक्ट टीचिंग करा जाय पिला माने इम्पैक्ट टीचिंग बोथ रेगुलर एंड रिसोर्स टीचर माने कोन इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो माने इंटीग्रेटेड एजुकेशन माने आंसर करेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन नेक्स्ट कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट मीन माने कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट बोथ स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक हमें करिकुलर पाठ पढिबा एकेडमिक पाठ पढिबा प्लस एकेडमिक बाहर डांस म्यूजिक पाठ पढिबा नेक्स्ट which of the following is established for the education of girls of socially and economically disadvantaged group ला माने इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज वाले ग्रुप रे अछि गर्ल्स मान पे ला कोन केजीबीपी केंद्रीय जो गर्ल्स जो बालिका विद्यालय माने पई कोन होची केजीबीपी उटा तो गर्ल्स मान पई माने ईएमआरएस रे पूरा बोथ गर्ल्स बॉयज एंड पढि परे सेति पे ईएमआरएस हबो नै आंसर सी नेक्स्ट कोन ना ग्रोथ स्टार्ट फ्रॉम व्हिच स्टेज ग्रोथ केबे स्टार्ट होता है ना प्रीनेटल हम जन्म जेते कंसेप्शन स्टार्ट हे जिवा ना से प्रीनेटल स्टेज ए प्रीनेटल स्टेज माने पढितले 280 डेज 40 सप्ताह पढितले क्वेश्चन डायरेक्ट अछि सब क्वेश्चन डायरेक्ट अछि इजी क्वेश्चन नेक्स्ट which principle is not associated with growth and development कोटा गोटे प्रिंसिपल नुवा पिला माने प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिग्युइटी ऑप्शन कारण कॉन्टिग्युइटी माने कॉन्ग्रुएंस होची कॉन्ग्रुएंस माने मैचिंग होची ठीक अछि कॉन्टिग्युइटी माने अछि कंटीन्यूअस प्रोसेस इंटीग्रेशन माने कंबाइन होबा तो प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन पिला माने कोनोसी प्रिंसिपल नै आंसर डी नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन a child refuses to follow rules while playing games with peers but gradually learns करूची cooperation this change indicate development in कोन पिला माने ना इमोशनल मैच्योरिटी तो हेई नै ठीक मोरल रीजनिंग तो कोनोसी राइट रॉन्ग हेई नै एडी कोन आइछि सोशल मैच्योरिटी सोशल कम्युनिकेशन इंटरेक्शन करूची कोऑपरेशन करूची माने इंटरेक्शन तो सोशल मैच्योरिटी आंसर होबो नेक्स्ट a teacher want to promote higher order thinking among students which strategy of the following is most effective को स्ट्रेटजी टा सबटु बेस्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग पे हायर ऑर्डर थिंकिंग कोन ना गिविंग रिपीटेड प्रैक्टिस प्ला माने ठीक नुह एनकरेज मेमोराइजेशन ठीक नुह इंक्रीज होमवर्क प्ला माने ठीक नुह किंतु आस्किंग स्टूडेंट टू एक्सप्लेन यदि पिला आस्क करिबा एक्सप्लेन करिया पे आंसर इज करेक्ट डी इज आंसर करेक्ट नेक्स्ट which psychologist
propose the stages of cognitive development মানে যেটা ডাইরেক্ট কোশ্চেন আসছে পিয়াজে ଆମର কগনিটিভ কনস্ট্রাকটিভিজম ডিএফ স্কিনার আমরা আসলে অপারেন্ট কন্ডিশনিং থিওরি সব যা পড়াইছিলে সব কোশ্চেন আসছে নেক্সট a student is struggling to solve mathematical problem the teacher provide hint rather than fully solution hint provide করছি fully solution দাও তা মানে মানে scaffolding temporary support temporary hint মানে scaffolding answer scaffolding होला at which stage development a child thinking process of self centered मतलब self centered thinking को stage रे है ना मतलब प्री चाइल्डहुड बा प्री जो हमर था अर्ली चाइल्डहुड 2 to 7 years 2 to 6 year माना जाए प्री चाइल्डहुड बुझियला नेक्स्ट टीचर allow student to ask question explore idea and collaborate with learning which role does the teacher play in this classroom तमने को रोल प्ले करूछथि पिलाटा टीचर allow student to ask question explore idea तो टीचर गोटे कोन टीचर गोटे facilitator learning करूछ टीचर रोल एठी नॉलेज ट्रांसमिटर नॉलेज टीचर गोटे फैसिलिटी प्रोवाइड करूछ तुम नेक्स्ट which strategy most effective for multi-grade teaching माने multi-grade teaching by को strategy सबटु बेस्ट ना multi-grade teaching by सबटु बेस्ट पिला माने कोन गोटे क्लास में वैरायटी ऑफ पिला माने कोठी अछि देखा देखा using group work and peer learning जोटी peer work and group learning होतबा सेटा कोन ना multi-grade by benefits गोटे क्लास में गोटे पिला बसिबेनी एटा मोनोग्रेड हेजिवो multi-grade मोनोग्रेड गोटे पिला बसिबे गोटे कैरेक्टर से पिला multi-grade वैरायटी ऑफ पिला माने बस क्वेश्चन आशा करछि ठीक थिबो next which type of teaching material involves the use of picture and chat to explain topic in the classroom मतलब chat and picture use करछ माने कोन ना visually aid जो माने visually aid माने संग आंसर कीजिए chat picture और visual aid रो एग्जांपल next which one is helpful in developing creativity मतलब creativity development करिया पे कोटा कोटा हेल्प कोटा writing sentence in 10 times लिखला बने doing 10 addition na counting the alphabets in sentence na writing different use of paper but piece of paper it is called creativity different idea lekhiba new lekhiba originality lekhiba mane creativity next according to Albert Bandura children learn many things by watching others this process is known as observational learning theory Albert Bandura option B जो माने B मारिछ आंसर इज करेक्ट B is answer correct next which of the following classroom practices best promote inclusive education in the classroom मतलब inclusive education कोटा सपोर्ट करूची teaching all learners as per their need yes need अनुसार पाठ पढले हबो आंसर same teaching for everyone na teaching for high achievers na teaching some students separately माने एटा कोन पिला माने सेपरेट सम स्पेशल एजुकेशन जीवा inclusive education next how can teacher address individual difference in the classroom केमिति टीचर टा एड्रेस करियो individual difference classroom same teaching na group student to by mark na पिला माने group student by mark पे नुवा focus only gifted student करे परिबो नाही use variety teaching method and assessment to जदी यूज करछि आंसर डी 19 नंबर आंसर डी जो माने मारिचो करेक्ट आंसर न लास्ट को म जणेबो कमेंट बॉक्स रे पेडागोजी रे केतरा क्वेश्चन ठीक हला कमेंट बॉक्स रे जणेबो नेक्स्ट असला which of the following material is audio visual in nature पिला माने ऑडियो विजुअल इन कोटा कोटा आसपरी ना रेडियो टा सुनुचे मैप टा देखुचे टेलीविजन बोथ ऑडियो एंड वीडियो आंसर इज करेक्ट नेक्स्ट ब्लैक बोर्ड टा पिला माने कोन ओनली ऑडियो which type of evaluation is specifically used by teacher to identify learning gap and difficulty पिला learning gap difficulty पे को असेसमेंट करता पिला माने diagnostic assessment जो माने diagnostic assessment आंसर इज करेक्ट नेक्स्ट formative assessment improvement time placement assessment end time which is not an assessment tool पिला माने assessment tool नो checklist absence presence तक rating scale degree of behavior rubric scoring criteria किंतु progress card टा कोन गोटे हमर आंसर चेक कुछ टूल्स नो बा कोनो से असेसमेंट टूल नो नेक्स्ट what type of assessment is the entrance test मतलब entrance test का कोपर असेसमेंट
ना एंट्रेंस हला प्लेसमेंट असेसमेंट ने बीएड एंट्रेंस टेस्ट पीजी एंट्रेंस टेस्ट समेटिव नो डायग्नोस्टिक नो फॉर्मेटिव नो नेक्स्ट माने बहुत इजी क्वेश्चन है तम देछि which is not a recognition type of मतलब recognize करिया माने मैच करबा कि आंसर नीचे लिखियो पड़िबो ट्रू एंड फॉल्स यस recognize सेंटेंस कंप्लीशन मतलब एटा recognize नुह मैचिंग टा मल्टीपल टा recognize करछ आंसर देइछि देखि लिखिबो किंतु सेंटेंस जे लिखला माने एटा कोन सप्लाई टाइप recognition टाइप माने देइथिबा आंसर देखि लिखिबो ट्रू और फॉल्स मैचिंग करबो बा चारटा ऑप्शन बाछि लिखिबो recognition करछ नेक्स्ट which one is not related to competency based teaching गोटे competency based teaching रो related नुह मतलब competency based teaching कोन ना all learners a lesson is divided into smaller units plan ठीक अछि competency are arranged serially from simple to complex plan ठीक अछि each competency is based on previous competency में मैच वाला माने मीनिंगफुल होबो किंतु टीचिंग लर्निंग ऑल competency is done simultaneously पिला माने के बाबू लिंक करले बेटर होबो सबुडा अलगा अलगा competency पढेबा बेटर नुह नेक्स्ट आंसर डी जोने डी मारिचो आंसर करेक्ट नेक्स्ट the information about what a learner can do in future माने फ्यूचर को जोटा असेसमेंट करता है को असेसमेंट कइबा ना हेडा हमें कइबा एप्टीट्यूड टेस्ट दी 15 एप्टीट्यूड टेस्ट तो फ्यूचर पोटेंशियल तुम एडमिशन नउचो एग्जाम करा होछ तो भलो टीचिंग एप्टीट्यूड एग्जाम करला माने तुम फ्यूचर रे भलो परफॉर्मेंस करिवो टीचर हे परिवो फ्यूचर परफॉर्मेंस के शोकेस करता है एप्टीट्यूड टेस्ट आंसर करेक्ट जो माने माचो बी ठीक है हां what type of question should the teacher ask to identify creative children तने क्रिएटिव चिल्ड्रन माने को आइडेंटिफाई करे पे को टाइप क्वेश्चन पचारिबा पिला माने मन क्लोज एंडेड नुह सब बेले ओपन एंडेड पिला माने पचारले पिला वेराइटी ऑफ आंसर आसीबो किछि न्यू आंसर आसीबो नोबिलिटी आंसर आसीबो किछि यूनिकनेस आंसर आसीबो which factor mainly refers to genetic trace passed from parents to children कोटा गोटे फैक्टर टा जेनेटिक ट्रेट जो पास होइथे कोन पिला माने एनवायरनमेंट कल्चर सोसाइटी नो हेरिडिटी द्वारा होइथे पास होइथे जेनेटिक जोड़ा हम इनहेरिटेंस गुडा CWSN stand for पिला माने पूर्ववर्ष क्वेश्चन थला सेम क्वेश्चन चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड ऑप्शन डी चिल्ड्रन विथ CWSN पर कोन चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड हला जो माने मारिचो ए क्वेश्चन टा रिपीट हेची पूर्ववर्ष आस्तला ए वर्ष भी आसी लास्ट क्वेश्चन पिला माने सीडी रो सीडी लास्ट क्वेश्चन which of the following is the most important feature of formative assessment माने formative assessment कोडा मोस्ट फीचर रैंकिंग कंटीन्यूअस फीडबैक अवॉइडिंग ना कंडक्टिंग एग्जाम ना बी पिला माने जो माने बी मार्च आंसर ठीक अछि कंटीन्यूअस फीडबैक हमर एठी अंत घटिछि जो माने करो सीडीपी रे 30 आउट ऑफ 30 अछि वंस अगेन त माने पे गोटे क्लास कारण बहुत भलो परफॉर्मेंस करछो भलो रिजल्ट करछो माने बेटर आनिछ त माने मोस्ट ऑफ द पिला मेसेज आसे 30 आउट ऑफ 30 रहि जाइछि ओके एठी सरीला नेक्स्ट हमर सार आसीबे हम पेडागोजी सर सब्जेक्ट पेडागोजी सर आसीबे हमर डिस्कशन करिवे कंटेंट पेडागोजी on
गुड आफ्टरनून छुआ मैंने गुड आफ्टरनून छुआ मैंने आज इंग्लिश रो क्वेश्चन आई होप यू कैन हियर मी इंग्लिश रो क्वेश्चन बहुत सहज थिला एबे क्वेश्चन टा देखिबा चलो एटू आरंभ होइछि मु तमरो पेडागोजी लैंग्वेज पेडागोजी सार तंत्र पढेबे मु खाली तमरो आरंभ करबी इंग्लिश पार्टटा एक्सक्लूसिव इंग्लिश पार्टटा देखो एटू आरंभ करबा क्वेश्चन को आगो पढ़ला बेले पैसेज अछि पैसेज रे आगो सबले कहथिली पैसेज परे पढिबो आगो क्वेश्चन पढिबो क्वेश्चन रे कोन कोन देछि आगो थोड़े देखि दियो गोटे क्वेश्चन देछि पैसेज इज अबाउट व्हाट सेकंड क्वेश्चन देछि सील यूज्ड इन द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इज यूनिक काहे सेटा यूनिक जो सील दा फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस रे अछि 68 रे क्वेश्चन रे अछि इफ आई एम नॉट रॉन्ग जे बिफोर 2011 this post office was called what एटा अछि तापरे आसिला which word in the passage means very attractive तो देखले जणा पड़छि अट्रैक्टिव रे गोटे वर्ड वाला पिक्चर्स क्यू तथा देखिबा हमें 70 स्पेशल फीचर ऑफ द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस एति की क्वेश्चंस तर देछि पैसेज रिलेटेड एति की अछि आगटे देखिबा पढ देबा पैसेज टा को Tourists to Jammu and Kashmir have another attraction, a floating post office on the Dal Lake in Srinagar, the first in the country. The floating post office, Dal Lake, claimed to be the only one such post office in the world. Floating post office Bhasuchi is built on an intricately carved maroon houseboat fastened on the western edge of the Dal Lake. The post office lets you avail of all the regular postal services available in the country while being afloat. Afloat माने पानी रे भासीगी. The seal used एटा क्वेश्चन आंसर अछि गोटे. The seal used on everything posted from floated post office is unique. Seal टा ही unique से लेकिछि. Along with the date and address, it bears the design of the boatman rowing Sikhara on the Dal Lake. The special feature, question achi. The special feature of this post office is that letters posted from here carry a special design, which are the pictures queue. Pictures queue जोड़ा question देछि सुंदर को बुझोछि हमर attractive रा एटा आंसर आसिला scenery of Dal Lake and Srinagar city. एटा बेटा आंसर तार कोन अछि ना special तार design कहारो now pictures queue scenery of Dal Lake and Srinagar city. These pictures reach wherever these letters are posted to and hence promote Kashmir as a tourist destination across the world. This is actually a heritage post office that has existed since the British times. It was called question Nehru Park Post Office before 2011. But after that, Chief Postmaster John Samuel renamed it as Floating Post Office. First question, this post office, this passage is about what? This passage is about the floating floating post office on the Dal Lake. Second question was seal used in the floating post office unique kahinki? It bears the design of a boatman rowing a sikhara. Etari answer direct achi talethi answer kon asila A. तापर आसीबा हमें 68 रे कोन लिखि छी बिफोर 2011 दिस पोस्ट ऑफिस वाज कॉल्ड व्हाट तो 2011 पुरु नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस को जाउतला जो माने नेहरू पोस्ट ऑफिस करथबे तत्तर के भूली जो मुछवा माने आंसर ताले कोन हो नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस हमें कहबा परफेक्ट बेटा ता परे आसीबा हमें कोन ना
परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा which word in the passage means very attractive pictures queue से pictures queue डाल ले को describe करिछि ताला आंसर एडी कोन होबो ना pictures queue ता परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा the special feature of the floating post office कोन ना design of the pictures queue डाल ले एंड श्रीनगर एटा से अंका हेछि ताला आंसर कोन होबो एटी design of the pictures queue डाल ले एंड श्रीनगर डायरेक्ट क्वेश्चन अछि किछि भी बुले वाले की देनी बेटा पूरा इजी अछि से आई होप पिला माने बहुत भलो करिथिबे ता परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा हमें 71 को आसीबा अगेन इटा थोड़े देखि दबा क्वेश्चन नले पढि दबा तो आंसर बाहर जीवो Nobel Prize is an international award administered by the Nobel Foundation and is based on the fortune of Alfred Nobel. Alfred Nobel, a Swedish inventor and entrepreneur. The Nobel Prize is awarded for the best contribution in the fields of cocoa-field physics, chemistry, medicine, literature, and to the person who has contributed by and large to bring peace and art. To bring कौन बेटा हमरो ना peace and art. ताले एक फील्ड दिया जाउची को फील्ड दिया जाउनी आंसर आसको एटा पचाची कोथरे दिया जाउनी ओटे क्वेश्चन थला आंसर आसको मैथमेटिक्स रे दिया जाउ नाही 72 टा आसीबो in 1968 the Sweden Central Bank established the Sveriges Riksbank's prize in economic sciences in the memory of का ना रहिछि ना Alfred Nobel एटा गोटे क्वेश्चन अछि. Except for the Peace Prize, the Nobel Prizes are presented in Stockholm, Sweden at the annual prize award ceremony on the 10th December, the anniversary of Nobel's death. एटे पचराई देखो 74 नंबर 74 नंबर टा कोन अछि नोबेल प्राइज केबे दिया जाए तला आंसर कोन होबो ना हिज डेथ डे सेडा आसीबो तापर आसीबा कोन अछि the Nobel Prize the recipients lectures are normally held in the days prior to the award ceremony. The Peace Prize and its recipients lectures are presented the annual prize award ceremony in Oslo. Peace Prize टा कोड दिया होछि Oslo, Norway रे दिया जाउछि. एटा एठी आंसर देला तले एटा गोटे क्वेश्चन आसी गेला हमरो आंसर आसी गेला usually on 10 December every year. Now Nobel Prize ताले कहा नारे दिया है आफ्टर सेट कौन लगा दिला Alfred Nobel. This is an answer. एटा गोटे आंसर मिली गेला हमको तापरे कोन आसीला 70 पर 70 71 पर 72 72 रा कौन क्वेश्चन अछि नोबेल प्राइज इज नॉट अवार्ड कोथरे ना मैथमेटिक्स से दिया जाए नहीं 73 वेयर इज द नोबेल प्राइज पीस प्राइज अवार्डेड एवरी ईयर पीस प्राइज हमें कोड देखिले दिया होछि ऑस्लो नॉर्वे रे दिया जाउछि तापरे कोन दिया गेला एनुअल नोबेल प्राइज सेरेमनी सेलिब्रेटेड ऑन अल्फ्रेड नोबेल्स डेथ डे तंकर डेथ डे रे ही दिया जाए which of the following is the antonym of the word recipient recipient माने जे पाए जे दिए ताकू कोन कहा जाए डोनर जे दिए ताकू कोन कहा जाए ना डोनर तापर आसीबा हमें देखो सब लो क्वेश्चन हे गेला नथिंग इज लेफ्ट हियर कितने इजी रही छी as goddamn easy how कोन दे I am so tired dash to bed for a rest एठी हबो एबे टायर्ड अच्छे से एबे तले जिबे नियर फ्यूचर पे हमें कोन करबा ना नियर फ्यूचर पे आई एम गोइंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस से बुझेबो त आंसर कोड आसीला आई एम गोइंग टू बेड फॉर अ रेस्ट तले आंसर आसला एटी कोन बेटा आई एम गोइंग टू बेड फॉर अ रेस्ट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड व्हाट अ सेकंड व्हाट इज इट क्या What a second. Okay. Take part in this. First variant economy. Thank you.
चलो I am so tired I dash to bed for a rest पद्धति एटा आंसर आसीबो मो छुआ माने कोन आसीबो एटा कि I am going एटा आसला 76 77 को आसीबा let us get to the 77 lots of information on what dash available on TV कोडा कोडा वर्ड अछि बेटा रूल कोन all of most of rest of plenty of lost of ए समतम परे सिंगुलर नाउन थिले सिंगुलर वर्ब हबो प्लुरल नाउन थिले प्लुरल वर्ब हबो एटी कोन अछि लॉट्स ऑफ परे हमर एटी इंफॉर्मेशन व्हिच इज अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन कोन हमर सिंगुलर तो आंसर एटी सिंगुलर हबो तले आंसर एटी इज अवेलेबल कोन हो बेटा हमरो इज अवेलेबल जो माने इज करछंती परफेक्टली परफेक्ट सब हबो बहुत इजी बेटा 9th रे क्वेश्चन बहुत गॉडडैम इजी बहुत इजी बेटा एते इजी आसी कि मार्क टा बेटा कट ऑफ टा एटा कि बेसी जाई पारे 78 को आसीबा ही वाज द काइट डैश इन द स्काई मन रख एटा बेटा बढ़िया रूल आसी छी कोन बेटा हमरो वॉच जेतो बेले वर्ब्स ऑफ सेंसेशन थिबो वर्ब्स ऑफ सेंसेशन वॉच स्मेल फील एउडा को थिबो ता परे जो वर्ब आसीबो प्लस सेटा वर्ब v1 विदाउट टू हबो किंबा वर्ब प्लस ing हो दीटा का अलाउड आई हर्ड द बॉम्ब्स फॉल भी कहि परिबी फॉलिंग भी कहि परिबी एटी कोन अछि हमर वर्ब्स ऑफ सेंसेशन वॉच आसी गला तेणु तापर हमर जे देखिबा कोन लिखि दिटा कोडा अछि राइट वर्ब फर्स्ट v180 अछि विदाउट टू लिखि देखो विदाउट टू तार आंसर कोडा ए 78 कोडा हो बेटा हमर ना ए 79 let us get to the 79 I saw a dash boy जनरल रूल रे इथे आगो आसीबा कथा कोन ना dosa.com रे आगो आसीबा कथा बेटा जे आगो ओपिनियन किंतु एटा हला टॉल डार्क और हैंडसम एटी आंसर आसीबो काई कि इट इज एन idiomatic expression EDH कहते ना idiomatic expression रे हमर dosa.com रूल टी काम करिवो नाही बापराना ढिकी गली को बापराना ढिकी गली कहबा मान ढिकी कहि पेरी जेमति थाई इडियम्स गुडा को सेमति रखा जाय तले एटी आंसर आसीबो टॉल डार्क एंड हैंडसम आकु जो माने आगो करिथिबे कोन ना आगो ओपिनियन से रूल एठी काम दबो नाही तले आंसर एटी 79 डी हबो 80 को आसीबा एटा सब बेले पढुची परीक्षा रे मु कहि देली भी 99 पॉइंट ऑफ टाइम पूर्वरो कोन से बेटा हाबावाज अछि एपडे एपडे यदि हाबावाज अछि पूर्वरो परफेक्ट टेंस अछि परफेक्ट कंटीन्यूअस तापर एपडे पॉइंट ऑफ टाइम अछि ताले सिंस आसीबो पीरियड ऑफ टाइम पे फॉर करिता इंटेंट परे 2 आसीबो इंटेंट परे कोन आसीबो मुछवा माने ना 2 आसीबो ताले 81 कोन आसीला द कैंपेन इज इंटेंडेड टू एडुकेट द पब्लिक टू रेस्पेक्ट द एनवायरनमेंट I feel the people here are 82 hala people here are what kind they are what kind tale answer kon asila what kind mane kon asila na adjective asu edi kon beta amaro disappointed hala kon amaro verb for second form as adjective taku कहा जाए past participle तो कमे कौन कहबा ना past participle एठी people is equal to disappointed answer C तापर आसीबा 83 को छुआ माने मैनेजर एटा मु क्लास रे करै छी बारंबार कहथि पढियो पढला कौन बेटा द मैनेजर एंड द ओरेटर जेतेडा सब्जेक्ट सेतेडा आर्टिकल अछि माने दिस वर्ड टू डिफरेंट पर्सन्स मैनेजर टा अलगा लोक ओरेटर इज डिफरेंट लोक ताले इट इज सिंगुलर हबो नाही इनवाइटेड v3 अछि एक्टिव अछि पासिव अछि कन से निजे निजे इनवाइट करि परिबेनी ताले आंसर कोन हला बेटा हमरो
जेहेतु प्लुराल हे गेला दि जण बुझौछि हैज बीन भी होबनी आंसर हैव बीन आंसर कोडा ना हैव बीन बेटा हे गेला तापर आसीबा नेक्स्ट क्वेश्चन 84 yeah it is goddamn easy कौन देछि मोहित dash the student of the year last year बतेइथिली कौन कौन कहइथिली ago yesterday last plus time एटा थिले हमर सिंपल पास्ट हुए कौन होबा हमर एटा हेले सिंपल पास्ट होबा अर्थात सब्जेक्ट परे v2 भर सेकंड फॉर्म कोड छि बेटा हमर आंसर आसिला b 85 को हमें कौन कह जवा को जेरॉन कह जाए smoking in public place is prohibited now a oops it is this तो नहीं जीवा there you are stay put there now what is dangerous এটা what आंसर আসলা মানে এটা নাউন ভাবে ইউজ হইছি তাহলে ভার্বটা তাহলে নাউন ভাবে ইউজ हुए তাকু ভার্বাল নাউন in fact this is verbal noun ताकू कहा जाए जेरॉन ताकू कौन कहा जाए जेरॉन आंसर आसिला हमरो बी वर्बटा एडजेक्टिव भाबे यूज हेले पार्टिसिपल कहा जाए नाउन भाबे यूज हेले कौन हो बेटा हमरो ना ताकू हमें जेरॉन कहबा एटा जेरॉन व्हाट आंसर आसिला सब्जेक्ट सेंटेंस सब्जेक्ट सबले नाउन द प्रोनाउन हे पिरो इट इज नॉट अ प्रोनाउन ताले एटा ओटे नाउन फ्रेज भाबे यूज हेछि ताले एटा आंसर कोन हो एटी नाउन हबो नाउ दिस इज तमरा आसी गला बेटा हमरो कौन ना दिस पार्ट इज मोस्टली Amara 86 and then comes 87. These are all something to do with Tamara pedagogy, subject pedagogy. So I'm leaving it out. But I'll come to the 90th question. 90th question, right? Which climb is not. Oh, what to letter climb? हमें pronounce करेगा नहीं. Letter climb रे climb हमें कहे B pronounce हुए नहीं. तो आंसर आसिबो कौन बेटा हमारा? आंसर आसिबो B. आंसर कौन आसिबो बी कम क्लाइम एवडा तो बेटा हमर कम करे बी करबानी प्लम रे प्लम कहबा प्लम्बर कहा जाए प्लम्बर रे बी प्रोनाउंस होनी तले इस अगर कौन होनी बेटा हमर बी प्रोनाउंस हो नाही आई होप जे पिला मानकर फर्स्ट राउंड फर्स्ट पेपर जेते इजी अछि सेकंड पेपर भी मोर विश्वास जे छुआंगर मोर निश्चय भलो हेतिबो ना आई विल गो एंड कॉल योर नेक्स्ट टीचर तमन से आसी गेटा बुझे देबे नेक्स्ट जो जार अछि सुस्थ रहिबो भल रहिबो परीक्षा रे भलो होबे निश्चय हां स्टिक कहला बेटा सुमन बेटा बहुत इजी बेटा डैम इजी परफेक्टली करेक्ट कहला ना से तरह चल ये तरह हेलो 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 आवाज आसतो देखियो हमें थोड़ा हैंग हो ना मैं केते नंबर को फास्ट जीवा 61 सीडीपी सार करे दिजंती ओडिया पेडागोजी मैम करेबे ठीक अछि हमें आ एक्सेप्ट आ जहां भी रहला पेडागोजी हमें करियो ठीक अछि
अच्छा 61 कौन कहछि which are considered to be the secondary skill language रे पढ़ाई छी तुमको पढ़ेइथिली कोडा करी के आछे समस्ते कोडा करछो सेकेंडरी स्किल्स कोडा हबो लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग लिसनिंग राइटिंग ना रीडिंग राइटिंग कोडा हबो रीडिंग राइटिंग करी के आछो तो नेक्स्ट जीबा the teacher asked learners to rearrange the jumble letter को rearrange करिया पई कहले to find out meaningful word jumble letter को हमें rearrange करले गोटे meaningful word पाइले ओके एगुडा को एटा कोनटा बुझेइबो यूज ऑफ वर्ड्स comprehension grammar ना spelling is your right answers next जीवा next कोन करछो अरे 63 which of the following is related to skills of writing रा skills कोटा okay कोन कहछि I have it spacing phonetics हबनी स्कैनिंग हबनी कोठा जिवो spacing है जिवो राइटिंग रो तापर देछि रीडिंग स्टोरीज नोवेल्स आउ प्लेस फैसिलिटेट को रीडिंग को फैसिलिटेट करिवो तुम कहछि जो रीडिंग ता तुमको मजा लागतबो जो एन्जॉय तुम करूतबो सेटा को प्रकार हबो इंटेंसिव हो ना एक्सटेंसिव हबो आंसर देछि ना नहीं हां आसी गला एक्सटेंसिव काली हमें करि के आसीतले एगुडा सब काली वीडियोस जे सब करिथबो सब जंकड़ एमतिया क्वेश्चन मु करिछि ना नहीं डिटो ए क्वेश्चन मु करिछि एटा भी करिछि डायरेक्ट क्वेश्चंस गुडा collecting and ordering ideas drafting editing अच्छा कोडा सब collecting हबो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिबा ऑर्डर रे रखिबा देखो आइडियाज गुडा को ड्राफ्टिंग करिबा एडिटिंग करिबा एगुडा सब कहार स्किल्स गुडा देन तक रिवाइज करिबा देन लास्ट को हमें पब्लिश करेबा एटा कहार राइटिंग रो नेक्स्ट हमरा पैसेज अछि जाइछि हमें स्किप करिबा हमें देन केते नंबर को जो 86 को जीवा हमें ओके English is considered to be a window to the world काहे की कंसीडर करा जाए ऑप्शंस पढ़ो इजीएस्ट लैंग्वेज एंती किछि अछि कि लैंग्वेज इजी एंती नाही वेस्टर्न लैंग्वेज काहे की ईस्टर्न लैंग्वेज काहे की हेबरी नीड प्रोवाइड एक्सेस टू मॉडर्न नॉलेज अच्छा रिच लैंग्वेज एंती न हमर ओडिया भी गोटे रिच कल्चर हम लैंग्वेज रो अछि कोडा हिजो इट प्रोवाइड एक्सेस टू मॉडर्न नॉलेज इन साइंस और टेक्नोलॉजी रे जहां भी अछि थ्योरम अछि सेटा सब जंग कोतरे इंग्लिश रे रिटन हेछि सेहि पई एटा कोन हेछि इट्स ए विंडो टू द वर्ल्ड 86 गला देन 87 लर्नर्स इज नोट टेकिंग स्किल सेटा केते यूज करचंती रीडिंग टेक्स्ट बेले नोट टेकिंग करिवा की राइटिंग ने से तो लिखु जे नोट कोन टेकिंग करिया स्पीकिंग इन मीटिंग रे नोट टेकिंग करिवा नहीं करिवा कोतरे लिसनिंग टू समथिंग जेते बेले किछि जिंस को हम सुनु छे काहा तो ठीक अछि किछि ओटे इन्फॉर्मेटिव कथा कहिला त हमें नोट टेकिंग करिवा all the numbers on a 4-line handwriting papers are written in कोतरे नंबर्स गुडा को हमें कोतरे लिखिबा लोअर 3 लाइन में लिखिबा डायलॉग इन यूजफुल डेवलप अच्छा डायलॉग इज यूजफुल फॉर डेवलपिंग कॉम्पिटेंसी इन डायलॉग केते बेले रीडिंग बेले डायलॉग यूज करछे कि लिसनिंग बेले करूछे स्पीकिंग बेले भी डायलॉग यूज होते कोठाई जीवो लिसनिंग एंड स्पीकिंग ठीक अछि नेक्स्ट जीवा क्लाइंट रे डी एटा तो हम सर करे दै छंती ठीक अछि इंग्लिश गला हमें ना मैथ आसीबा मैथ केते नंबर आरंभ होईची मैथ क्वेश्चन आरंभ होईची 91 रू ठीक अछि फर्स्ट आरंभ होईची देखिबा हाउ शुड द मैथमेटिक्स टीचिंग प्रोसेस
B, so that the student learning experience enjoyable. Kete learning experience ketebele enjoyable ho kon ki the students feels mentally satisfied when completing the task hei paribo. If the task was kemti reward hei pariboni, the task is according the students physical ability kahi asibo, the task is not experience based hoba katha koda ji answer A. Next, which objective of mathematics teaching is achieved by illustrating supplementary angles with an example. अच्छा, supplementary angle with an example जेतले दउची आमे गोटे supplementary angle आउ examples आमे नै जाउची एठी. Which objective को objective knowledge understanding application knowledge तो हबनी, knowledge केतेला हबो खाली आमे ता विषय रे जानिले understanding हे जीवो application हबनी काहे कि जेतेले आमे supplementary रो यूज केस जानिले जो नॉलेज टाको जानिले ताकू किछि यूज करी के हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कले किबा किछि एक्टिविटीज कले सेटा एप्लीकेशन अंडर आसीयो, एटा भी हबनी, एटा आसी कोडा अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट, व्हिच वन इज नॉट रिलेटेड टू द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स. नेचर ऑफ मैथमेटिक्स कोडा नुहे पैटर्न जानिचे एग्जैक्टनेस पढिचे और एक्सपेंडेड एक्सप्रेशन हबनी एटा ऑर्डर और सीक्वेंस पढिचे हेरा किरे रहिबो गोटे मैथमेटिक्स टा. नेक्स्ट, at which period of cognitive development the children becomes familiar with the exchange of mathematical operation. mathematical operation exchange से सिखिबो reversibility कैपिटल सिखितबो सेंसिंग मोड सेंसरी मोटर सिखिबोनी सेंस को यूज करी कि सिखिबो प्री ऑपरेशनल से रिवर्सिबल वगैरह से करि पर नथि किंतु कंक्रीट ऑपरेशनल एवडा से करिबो फॉर्मल ऑपरेशनल तो से हायर ऑर्डर थिंकिंग तर से डेवलप हेतो. नेक्स्ट, हाउ मेनी लाइंस इन अ सिमेट. अच्छा एटा तमर हेगला कोन 3 हो जीवो एटा कि तुम सार पढे जे मैथमेटिक्स पढो. नेक्स्ट केतेले अछि हमर अछि 115. Yes, in mathematics teaching, which method progresses from unknown to known. Unknown to known कोथरे जिबा unknown to known कोथरे inductive deductive analytic synthesis कोथरे analysis रे जिबा unknown to known. Next, if the students can show the difference between proper और improper fraction भितर से difference जानेला. which objective कोडा हमर satisfy करूची affective domain ताकू इंटरेस्टिंग लागुची कि किछि मेंशन हेइनी साइकोमोटर किछि एक्टिविटीज करूनी एटा हबनी सेति कोडा हे जीवो कॉग्निटिव हे जीवो. ठीक अछि. पास एटा तो मेमोरी लेवल क्वेश्चन किए कहिथिले abstraction is the soul of mathematics. एल बियर्स कहिथिले एल बियर्स एटा मन रखियो एटा तो जे पढितबो सेही करियो. नेक्स्ट कोडी अछि 115 120 सॉरी. अच्छा कोन कहै छी राइट 3 नंबर्स विथ एससीएफ करो ना 7 तीनटा नंबर लिखियो. व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस. को टाइप रो स्पेसिफिक आंसर टाइप केवल गोटी आंसर हो स्पेसिफिक रो हबनी. ओपन एंडेड क्वेश्चंस हेई परियो काहे कि हमें जदी एससीएफ तीन टा नंबर लिखिया हम लिखिली ए टाइप रो याकू तीनटा करि परिबी याकू तीनटा करि परिबी किछि भी ओटा ओपन एंडेड क्वेश्चन एटा कंक्लूडिंग हबनी मैचिंग टाइप का नुहो. नेक्स्ट, ए बी सी कला. अच्छा ए कला 60 डिग्री बी होची 70 डिग्री ओटा ट्रायंगल ला कहि देछि. ए दे देछि बी दे देछि जनरल सी पचार फाइंड द एंगल ऑफ सी पचार. एटा को टाइप रो इंडक्टिव हबनी हम एग्जांपल लेके रूल को जाउने. सिंथेटिक एनालिटिक हबनी कोडा जीवो डिडक्टिव हमें जानि छे ट्रायंगल 180 डिग्री तीनटा एंगल सम दुटा एंगल दे देछि गोटे एंगल हम भाग कर दो हमें उडी गले रूल्स टू एग्जांपल के गले. ओके नेक्स्ट शिवा प्रोपोनेंट ऑफ रैडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट के आंक भीतर किए रैडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट किए ग्लासर फील्ड बाइबर्स की हबनी अकिल पैट्रिक तो जानचो एटा होची प्रोजेक्ट रहि गेला. एटा होची हमरो भाइगर्स की तो नुह
सोशल आसी गले ये होची चेंज इन एक्टिविटी वगैरह करथले पोस्टनर से कोडा जो ग्लासर फील्ड प्याजे ये सब होचंती रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट अछि ईवीएस क्वेश्चन के आसीबा ईवीएस क्वेश्चन होची 121 नु स्टार्ट हिच पूरा डाउट क्लियर करियो ठीक अछि देखु छी 92 को जीबी या केतना देख दउछ 92 अच्छा सप्लीमेंटरी एंगल देखो कौन कहै व्हिच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिशियन अचीव बाय इलस्ट्रेटिंग सप्लीमेंटरी एंगल विथ एन एग्जांपल गोटे सप्लीमेंटरी एंगल मु ताऊ देई देली हला कह देली कि 20 60 दे गोटे सप्लीमेंटरी एंगल देई देली ठीक अछि से कौन कहै आउ हम तो एग्जांपल भी देइछे गोटे एग्जांपल देइछे सेटा नॉलेज लेवल होबो कि नॉलेज लेवल केते हो मु जेतले कह देथनी डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंटरी एंगल कोन नॉलेज बेस्ड से एति जानि थांदे किंतु अंडरस्टैंडिंग बेस्ड केते होबो जेतेबे से माने एंगल जानिले आ तो करि परुछुंती ठीक अछि तांगडा बुझी गले से माने जेहेतु मु देखली ए एंगल देली यार सप्लीमेंटरी केते से भाग कर देले काई केमति भाग रे बेले अंडरस्टैंडिंग तांगरा डेवलप हेची एप्लीकेशन काई केबोनी एप्लीकेशन केते हळ जेतेबे हम सेही ए जिंसटा से माने यूज करि पाले रियल लाइफ सिनेरियो रे ताको यूज करि पाले सेते बेले आसी जीवो एप्लीकेशन बेस्ड आसी जीवो एई ताको यूज करि कि से माने ओटा डिफरेंट सॉल्यूशन बाबे डिफरेंट प्रॉब्लम हला तार सॉल्यूशन काढी पाइले सेठी आसी जीवो एप्लीकेशन बेस्ड आसी जीवो हेट में एटा कोन है जीवो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है जीवो जीवा में ईवीएस को 121 the main purpose of diagnostic assessment asila mane kono identify learning difficulty learning gap कोठी अछि b the best tool for assessing attitude of participation activities of environmental study बढिया क्वेश्चन टा आइछि एटा हमें करिथिले काली assessing attitude of participation access हमें केमति जानि परिबा through checklist हमें जानि परिबा ठीक अछि नेक्स्ट जीवा discussion method in environmental studies is important for memorizing no sharing ideas and viewpoint writing long answer no silent writing अपन कितनी कोड है जो sharing ideas and viewpoints project method in environmental studies based on co principle learning by memorization no learning by listening no learning by doing सब हमें काली करथले most of the questions हमें काली discussion करिथिले next asiba the overall aim of environmental study teaching method is to develop kono examination skill develop karibo nuho memorization nuho writing skills nuho environmental awareness and responsibility habo why do you need local self government acha eta ye question as jauche next कितना नंबर अछि 146 objective of integration of science and social science in environmental study कौन objective अछि integration रो
ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेशन कोन फोकस ऑन कॉग्निटिव डोमेन केवल कॉग्निटिव डोमेन ऊपर हमें फोकस करबा कि नुह आइसोलेट करबानी स्टडी ऑफ फैक्ट स्किल डेवलपमेंट ओनली नुह सेते कोडा हबो holistic understanding of human environment relationship which of the following is not a aim of teaching environmental studies primary level ला हमें पढौचे कोटा नुह हमर aim to aware about importance of environment तो हबो नो इकोलॉजी बैलेंस ऊपर पढिबा हे परिबो excessive use of natural resources ए क्वेश्चन हमें करथले कोडा बनी राइट आंसर हे जो कोडा ऑप्शन सी हे जिवो लाइफ स्किल मोरल वैल्यू एगुडा तमे सिखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन which objective of environmental studies helps children connect classroom learning with real life classroom learning को हमें real life रे connect करिबा को objective टा theoretical knowledge rote learning theoretical knowledge नो rote learning नो examination oriented learning नो इसमें कोटा आइबो experiential learning the concept of interdependence in environment is best taught through कोथरे interdependence हमें कोथरे taught करि परिबा सिखि परिबा स्टोरी टेलिंग रे नुह रीडिंग टेक्स्ट बुक नुह डिक्टेशन नुह जेतला हमें फील्ड विजिट करिबा ऑब्जर्वेशन करिबा इंटरडिपेंडेंट ता हमें देखि परिबा सेउटू डायरेक्ट हमें ऑब्जर्वेशन थ्रू रे सिखि परिबा नेक्स्ट which assessment tool helps track children ता प्रोग्रेसिव देखिबा प्रोग्रेस रखि देखिबा चाइल्ड रो कोडी ओवर टाइम रे बहुत दिन धरिक देखिया को एनुअल एग्जामिनेशन तो नुह एमसीक्यू नुह ओरल टेस्ट नुह इसमें कोडा है जो आंसर पोर्टफोलियो क्लियर ठीक अछि एबे तमरो ओडिया टा के ओनली रहिला ओडिया टा स्मूथ में मेसेज पड़ेबे क्लियर समझते थैंक यू जो माने आंसर्स करी जो सब ठीक ठाक वेरी गुड देन हमें वेट करिबा काबू ऑफिशियल आंसर्स की आसु हम देखिबा